A very good morning, friends. So I hope you're all doing safe and healthy. Well, in this particular month in October, there were different thoughts coming to my mind. I spent time in terms of doing the Did You Know series with you. And this particular month, I thought I want to do something different. And what came to my mind is that why not have a little practical orientation on certain topics, especially which have got a huge practical relevance in the practical life. And one of the topics which was, coming to my mind, and that is what deals with IFRIC 12. Now, you must be wondering that I have been talking in terms of India, so where does this IFRIC 12 come into account? Well, let me tell you that IFRIC 12 is nothing but it is supposed to be given in the appendix to Indes 115. When you look at the interpretations which are given on various standards, we know that these are given in the appendix to the Indian accounting standards. So there is a particular appendix which is given in Indes 115, and internationally, we call this as IFRIC 12. IFRIC 12 deals with the concept of what we call a service concession arrangements. We call them as SCA. So I thought, in this particular month, let's make some videos, which is going to deal with these concepts of IFRIC 12. Because this is a very pertinent topic in a practical life, and I want to go about a little series on this, giving you some very concrete inputs at every video. So I hope you enjoy this particular thing. Let's, I think, begin with the first part on this particular IFRIC 12, that is service concession arrangement. अनअकैडमी पर जो बच्चे सीए इंटरमीडिएट की अपनी तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए आइकॉनिक बैचेस चल रहे हैं. सर, ये आइकॉनिक बैचेस और प्लस बैचेस के बीच में डिफरेंस क्या है? भाई, जो आपको चीज़ें प्लस बैचेस के अंदर मिलती हैं, उनसे एडिशनल फीचर्स आपको आइकॉनिक बैचेस में मिलते हैं. जैसे कि प्लस फीचर्स के अंदर आपको लाइव क्लासेस अटेंड करने को मिलती हैं, और उसके साथ साथ आप उसके अंदर रिकॉर्डेड क्लासेस पर भी एक अनलिमिटेड एक्सेस रखते हैं. लेकिन आइकॉनिक बैचेस के अंदर आपको कुछ एडिशनल फीचर्स मिलते हैं, जैसे कि देयर इज अ लाइव मेंटरिंग प्लेटफॉर्म. अब इसमें आपको कई सारी एडिशनल चीजें मिलेंगी. नंबर 1, आपको हर सब्जेक्ट की एक प्रिंटेड बुक मिलेगी. भाई, जब आप पढ़ते हैं तो नेचुरली आपको कहीं ना कहीं एक बुक की हार्ड कॉपी की जरूरत पड़ती है, तो प्रिंटेड बुक्स आपको मिलेंगी फॉर एवरी सब्जेक्ट. इसके अलावा आपकी 1-to-1 एक पर्सनल कोचिंग आपको अवेलेबल है, और साथ में इसके अंदर आपकी 1-to-1 डाउट सॉल्विंग भी अवेलेबल है. टेस्ट सीरीज एक बड़े स्ट्रक्चर्ड मैनर के अंदर की जाती हैं, जिसके अंदर आपने 40% कोर्स कंप्लीट किया, एक टेस्ट कंडक्ट किया गया, फिर आपने 40% टेस्ट कवरेज और की, फिर एक और टेस्ट किया गया, और फिर जब आपका रिमेनिंग 20% कोर्स कंप्लीट हो गया और इसके अंदर आपकी पूरे कोर्स की तैयारी हो गई, तो फिर आपका एक टेस्ट और कंडक्ट होता है, और उसकी पूरी की पूरी आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाएगी. इसके साथ आपके साथ बीच बीच में कुछ इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स भी जुड़ेंगे. वो अपने इंडस्ट्री एक्सपीरियंसेस आपको शेयर करेंगे, जिनसे आपको एक प्रैक्टिकल लाइफ का एक कनेक्ट मिलेगा. और ये नहीं, साथ में आप अलग से एक प्लेटफॉर्म पर एक कम्युनिटी के साथ भी जुड़ पाएंगे. ये सभी फीचर्स आपको आइकॉनिक बैचेस के अंदर मिलते हैं, और इसके अंदर जैसे मैंने कहा, एक 1-to-1 यानी 1-to-1 बेसिस पर आपकी एक लाइव मेंटरिंग होती है इन आइकॉनिक बैचेस, जिन पर आप अपने डाउट्स क्लैरिफाई कर सकते हैं, एंड इट इज ऑल जस्ट अ क्लिक अवे. एक कस्टमाइज स्टडी प्लान आपके लिए बनाया जाता है फ्रॉम ऑल दी डेडिकेटेड मेंबर्स. तो ये सभी एडवांटेज आपको मिलती है जो आइकॉनिक बैचेस के अंदर मिलती है. टेस्ट सीरीज के बारे में मैंने आपको ऑलरेडी बताया कि ये ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, और एक बड़े स्ट्रक्चर्ड वे में आपकी टेस्ट कंडक्ट होती है एट 40% कंप्लीशन, देन एट 80% कंप्लीशन, एंड देन एट 100% कंप्लीशन. और साथ ही साथ इसकी आपको एक पर्सनलाइज्ड फीडबैक दी जाती है, कहाँ आप लैग कर रहे हैं, किधर आप इंप्रूव कर सकते हैं. तैयारी तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन उसके साथ साथ अगर जिसे हम कहते हैं ना, एक
ऐसा नहीं होना चाहिए पोस्ट फैक्टो कंट्रोल हो, एक प्री फैक्टो कंट्रोल होना चाहिए लाइफ में कि जैसे जैसे आपकी चीजें चल रही हैं उस पर एक असेसमेंट कॉन्टिन्यूस चले। भाई अब एक मेन बात पर आते हैं कि अल्टीमेटली हर चीज इस बात पर सेटल करती है कि भाई इसकी सब्सक्रिप्शन सर कॉस्ट कितनी करेगी। अगर आप इस वक्त इंटरमीडिएट की बोथ ग्रुप्स की प्लान कर रहे हैं तो इसके अंदर लेट्स से यू टेक अ 12 मंथ सब्सक्रिप्शन, तो आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट बैठती है और पर मंथ बेसिस वो आती है 3188 और इस पर आप 10% डिस्काउंट भी अवेल कर सकते हैं। इसके लिए आप मेरा कोड इस्तेमाल कर सकते हैं CAKB10 और जिसके बेसिस पर आपको इस प्राइस पर 10% डिस्काउंट मिलेगा। तो ले दे के आप लगा लीजिए इफेक्टिवली आपकी कॉस्ट ऑलमोस्ट अराउंड 2800 के आसपास बैठती है। अगर मान लीजिए इंटरमीडिएट और फाउंडेशन का दोनों का आप प्लान कर रहे हैं तो नेचुरली 1 साल फाउंडेशन और 1 साल इंटरमीडिएट की तो 24 मंथ्स की सब्सक्रिप्शन प्लान कर सकते हैं और जिसके अंदर आपकी जो इफेक्टिव कॉस्ट है दैट इज 2750 मंथ। ये कॉस्ट आपकी है फॉर ऑल दी सब्जेक्ट्स इन दैट पर्टिकुलर ग्रुप, यानी कि इंटरमीडिएट के सारे आपके पेपर्स ग्रुप 1 ग्रुप 2 कंबाइंड, इंटरमीडिएट ऑल कंबाइंड, और इस पर आप 10% डिस्काउंट अवेल कर सकते हैं। तो भाई किस बात का इंतजार है, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है और आप इसके लिए सब्सक्राइब कर सकते हैं और कोड इस्तेमाल कर सकते हैं। तो आइए लेट्स क्रैक इट। Well, the first question, what comes to the mind is when you look at an arrangement has to be between two parties. So when you look at an SCA, that's called a service concession arrangement. Now, which are the two parties which are involved in this particular arrangement? One of the parties is called a grantor and the other party is called an operator. Now, what is a grantor? We know that not only in India but also world over that there are a lot of public services which are constructed, which are supposed to be constructed, I would say, by the government. But many a times what happens that these jobs are delegated to various private entities. So when a public sector service is to be created, it could be, for example, a road or maybe, for example, a prison for that matter. And this is, the role of construction is supposed to be of the government. But what the government does, it enters into an arrangement with another entity, and that is supposed to be a private entity. And that's the reason we sometimes also commonly hear that it is called a public to private entity concept. Why it is called a public to private? Because on one hand is the government, which is the public entity, and on the other hand is supposed to be a private entity. The government in this particular case, which is a public sector entity, is called a grantor. And the other hand, the entity which executes that particular service is supposed to be called an operator. Now this IFRIC 12 is actually dealing with the books of the operator. So that means when an operator is getting a contract from a grantor in order to construct or maybe to upgrade or maybe to maintain certain services which are public services, how does the accounting takes place in the books of the operator? Now at this particular stage, I'll also like to give you a little input in terms of that this kind of contract is, as we said, is deals with public services. Now a little clarification in terms of public services, because generally when we think of public services, what comes to the mind is that it is supposed to be open to the entire general public at large. Well, for a particular arrangement to fall in an SCA, it is not necessary that that particular arrangement is supposed to be available to the benefit of all. Like for example, when you are looking at a public service, for example, a road, it is available to the benefit of the public at large. But when you look at a prison, of course, it's not available to the public at large. It is only that, if somebody goes to the prison, now in that particular case, the prison is being, constructed by this operator. So the clarification is, when you say that there is a public service obligation, so when you say
that there is a particular contract between a public sector entity, a grantor, and an operator, which is a private sector entity. The private sector entity, the operator, is basically fulfilling what you call a public service obligation. Now, when you say it is a public service obligation, we can say what is important is that the services may not be available to all the members of the public. But what is important is that benefit is going to be available to the members of the public. So it's not supposed to be available to all, it is supposed to be available to the members of the public. Now, why I am dealing with this particular issue? When you look at a particular arrangement between a public and a private entity, I think this is the first litmus test. So we need to first of all zero down that that particular arrangement is being entered into with the sole perspective of, you can say that there is a public service obligation on the part of the grantor, but this is being fulfilled by an operator. So we can say, yes, it becomes a case where it is an SCA. Now the SCA, the service concession arrangement, has got certain features as well. So what I'm going to do in my next video, I am going to give you that what are the features of a service concession arrangement, so that it gives you a litmus test in terms of whether a particular arrangement is falling within IFRIC 12, or so-called the appendix of Ind AS 115. That's all in this particular video. Thank you for watching. Wait for the coming parts on this particular IFRIC. Bye-bye and take care.